Hari Om all. I take it we are all ready to begin this satsang this evening. We'll begin with preliminaries and purification. Sprinkle water on on yourselves and on the prayer goods, if you have any prayer goods in front of you. Om apavitraha pavitro va sarvavasthangato va yah smaret pundarikaksham sabhahyabhyantaraha suchi. Now sip water from the palm of the right hand 3 times, meditating on Bhagwan and appealing for purity. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Now, still meditating on Bhagwan, rinse your hands. Om Hrishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Put on your kus ring, if you have one, onto the ring finger of the right hand. Om Pavitresto Vaishnevyo Saviturvaha Prasvautnamichidrena Pavitrena Suryasya Rashmibhihi Tasya Te Pavitrapate Pavitraputasya Yat Kamaha Pune Tachakeyam. Apply a chandan dot to your forehead using your thumb. Om Chandanam Bandite Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harite Nityam Lakshmir Vasiti Sarvada. If your chirag or lamp hasn't been lit, you may light it now. Om Bho Deepa Tvam Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imam Maya Tang Pujang Grihas Tejo Pravardhaya Om Deepaya Namaha. Sprinkle some water on the bedi. Om Prithvi Tvaya Dhrita Loka Devi Tvan Vishnuna Dhrita Tvancha Dharya Mandevi Pavitrang Kuru Chasanam. Okay, we are now going to recite Ved mantras and mantras relating to Bhagwan. So it should appear on your screen shortly. You can follow and recite with me. You'll get the greatest benefit when you do the reciting as well. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyan Moolam Gurur Murtihi, Puja Moolam Guru Padam, Mantra Moolam Gurur Vakyam, Moksha Moolam Guru Kripa. Om Swasti na Indro Vridashravah, Swasti na Puksha Vishwavedah, Swasti na Starikshorarishtanemi, Swasti no Vrihaspatir Dadhatu, Om Payah Prithivyam Payah Oshadhishu, Payo Divyantarikshe Payodhaha, Payaswati Pradishah Santu Mahyam. Om Vishnoratamasi Vishno Shnapresto Vishno Syurasi Vishno Dhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata Vishwe Deva Devata Brihaspati Devatendra Devata Varuno Devata Om Dyoho Shantirantariksha Gung Shanti
पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव तद्भद्रं तन्न आसुव ॐ आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतो स्तब्धासु अपरितास उद्भिदः देवानो यथा सदमिद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्र सुमतिर्यजूयतान् देवान् गुङ्रातिरभिनो निवर्तताम् देवानागुं सख्यम् उपसेदिमावयन् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॐ कान्पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमनं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करात् ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजं तन्माता पृथिवी तत्पिता द्योः तद्ग्रावानः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विन शृणुतन् धिष्ण्यायुवम् ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु षस्पतिं धियन् जिन्वामवसे पूमहे वयं पूषाणो यथा वेदसां सद्वृद्धे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृदश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे स्तुष्ट्वाग्वंसस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रानश्चक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारि कृषतार्युर्गन्तोः ॐ अदितिर्द्योर् अदितिर् अन्तरिक्षम् अदितिर् माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुश्रोत्रं प्रपद्ये पागोजः सहोजो मयि प्राणपाणौ ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुत वा हिरण्यैः नाकं गृभनानः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः ॐ आयुष्यं वर्चस्य गुङ्राय स्पोषमोद्भिदम् इदग्वं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राय विशताद्दुमाम् ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु ॐ हे हे रम्ब त्वमेषेहि अम्बिका त्र्यम्बकात्मज सिद्धि बुद्धि पत्यत्रक्ष लक्षलाभ पितुः पितः नागास्य नागहारत्वं गणराज चतुर्भुज भूषितः स्वायुधैर्दिव्यै पाशङ्कुशपरश्वधेः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम कृतः
इहां गत्य गृहाणत्वं पूजां कृतुं च रक्ष मे। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ॐ ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासुवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिललोचननिरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं ददत गुरुजटमण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणः देवाय तस्मै नमः। ॐ वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टां डमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलङ्कारदीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा अच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। ॐ लक्ष्मी क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां तां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम्। ॐ सीताराम पवनसुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। We have bhajans and kirtans and chalisa now. श्री गुरु चरण सरोज रजा निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचत केश राम हो राम हो राम
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए से जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति दीने बहुत बड़ाए, तुम मम प्रिया भरत सम भाई, राम हो 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 राम हो। सास बदन तुम रोयश गावे, अस कही श्रीपति घंट लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अनीशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कई सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद जिन, राम हो 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 राम हो। मारो मंतव्य भीषण माना, लंकेश्वर मई सब जग जाना, युग सहत योजन पर बानु, लीयो तारि मधुर फल जानु, प्रभु मोदिका मिल मुख माई, जल्दी लांगी गई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम नो ग्रह तुम रेते, राम हो 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 राम हो। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना, अपने तेज समारो आपे, तीन लोग हाथ के कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, राम हो 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 राम हो। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मरक्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तासु अमित जीवन पल पावे, राम हो 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 राम हो। चारों युग परतावे तुम्हारा, वे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंटन राम दुलारे, आस्त सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दास, राम हो 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 राम हो। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुपति पुरि जाए, जहाँ जन्म हरि बात कहाए, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, राम हो राम हो राम राम हो 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 राम हो।
जय 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 हनुमान गुसाए, कृपा करो गुरुदेव के न्याय। जो सत पार पात कर जोए, चुके बंदी महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महदेव। राम हो राम हो राम हो, राम हो राम हो राम हो, राम हो राम हो राम हो, राम हो राम हो राम हो। पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि राम, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण राम, नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि राम, हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण राम। सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम, सीताराम 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 राम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद राम, गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद राम, गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद राम, गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद गुरु शिवानंद राम। राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम, राघोनंदन 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 राम। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। Today we are doing Bhagavad Gita, chapter 6, verse 19, 19वां. Let's read it together. Yatha dipo nivatastho nengate sopama smrita
Yogino yata chittasya yunjato yogam atmanah. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. फिर इसको दोहराओ. लेट्स रिपीट दिस. यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम् आत्मनः. हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे. We'll read it once more, and I'm hoping that all of you at home are going to read this aloud. Let the sound of Bhagavad Gita fill your homes. Yatha Deepo Nivatastho Nengate Sopama Smrita Yogino Yata Chittasya Yunjato Yogam Atmanah. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, कृष्ण कृष्ण हरे हरे. अब एक एक शब्द पर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे. लेट्स लुक एट इंडिविजुअल वर्ड्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. यथा, यथा जिस प्रकार, जस्ट एज. दीपः, दीप इज अ लैम्प और दीपक चिराग. निवातस्य, निवातस्य जहां पर कोई वायु या हवा नहीं चलता है, विंडलेस प्लेस. So just as a lamp nivatastho in a windless place, न ingate, न ingate जो हिलता नहीं है, चलायमान नहीं होता है. Just as a lamp in a windless place is not disturbed. स उपमा, स उपमा वैसे ही, or similarly, we have a comparison with, there is a similar description with Atmavah Yogam Yunjata. So, Atma, Atmanah Yoga Yunjata. जो भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं. So, talking about Yoginah, a yogi who is fully focused on Bhagwan, meditating on Bhagwan. Yat Chittasya. How is he focusing? Yat Chittasya. With a controlled chit, controlled mind, controlled thoughts. तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार दीपक वायु रहित स्थान में चलायमान नहीं होता है, वैसे ही उपमा योगी को दी गई है जो परमात्मा के ध्यान में लगे हुए है. So just as a lamp in a windless place does not flicker, is steady, so too a yogi of controlled mind who is in meditation on Bhagwan is undisturbed. He is not agitated by the outside world. So in chapter 2, Bhagavad Gita, Bhagwan introduces this idea of light here. It says, Ya Nisha Sarva Bhutanam Tasya Jagarti Sanyami. That which is night for all. Therein, the self-controlled is awake. So in this verse that I just quoted now, awake means experiencing the reality. That means experiencing Bhagwan through sense control. So you control the sense while experiencing Bhagwan. So this verse 19 that we just read now
today that goes a little bit further than just sense control. It talks about thoughts being steady and freed from the influences of the senses. So even the thoughts are not under the influence of the senses. So we know that the mind is not steady. The mind is similar to the tip of a flame. Now, even when a lamp is steady, that means there isn't any wind disturbing it. There is still some flickering, but the flickering is so fast that it is not noticeable and it seems as if it is steady. Similarly, the mind might seem to be steady, but it is inundated with numerous thoughts. Right? As one thought ends or dies, another appears. The moment one thought ends, there's another thought there. In many cases, there are more than one thought at the same time, and we forget what we are doing. So as soon as one thought ends, there's another thought there. So the many thoughts are flickering like the fast flickering of the flame. And when the flame is shielded completely from the wind, then the flame glows upwards steadily. So we need to protect or shield the mind, just like how we protect or shield the flame so that it burns steadily and glows upwards. Similarly, we must protect the mind from the sense influences and desires so that it becomes a steady brilliance. The mind must become a steady brilliance, glowing upwards in thoughts of Brahman, glowing upwards thinking of Bhagwan only. So during meditation, ध्यान के समय धीरे धीरे gradually we go beyond experiencing the sense objects. And it's a very difficult thing to go beyond this influence of the sense objects. But in our states of meditation, there will come initially a few seconds when the mind is steady and it is not disturbed by the outside world. As you continue with your meditation on Bhagwan, more and more practice, you will find that you will be able to keep away the sense disturbances, the outside disturbances, for a longer period, for more than a few seconds. So gradually, we go beyond the sense experiences and beyond the sense objects as well, until the object of experiences diminishes and eventually it is free from these influences. So the mind is free from these influences. Just like how the wind is not allowed to disturb this flame, similarly, we control our thoughts and our mind so that there is no disturbance and we can glow upwards. We can evolve closer and closer to Bhagwan. While there is wind, there is always a chance that the lamp will be blown off. Okay? So sometimes there'll be a little bit of flickering. Sometimes the flickering will be greater. So the greater the flickering, it means the greater the amount of wind from outside. And the greater the disturbances in the mind, the less is our focus on Bhagwan. The less will we glow upwards, right? So similarly, when the winds of our senses and our sense objects, there is always this danger that the mind will be completely distracted from the Supreme. And we must be aware of this danger. And as we said in a verse that I quoted just now, that we must be awake
to these dangers. Our focus must therefore be on steady and undisturbed thought on the divine. Our thoughts must be steady and undisturbed, completely focused on the divine. And of course, this may sound like a very, very tall order, which it is. It is very difficult to achieve. But anything worth achieving is worth striving for. So we must continuously practice this, because the ultimate result is that our thoughts, our complete lives will evolve towards Bhagwan, upwards, without any flickering, eventually. But the process of getting there requires a lot of effort, and we all have the ability to make that effort. This satsang is one such opportunity that gives us a chance to focus on the Lord. And in everything that we do, we need to try and direct our minds towards Bhagwan. Shall we stop the Bhagavad Gita there? We're now going to go on to Ramayana. Today we are reading Balkand, Doha number 260, but we'll begin first with the invocation mantras. Jehi Sumirat Siddhi Hoy Sitaram Gananayak Karivar Badana Karo Anugraha Soy Sitaram Buddhirashi Subhaguna Sadana Mukha Hoy Vachal Sitaram Pangu Chadhai Girivar Gahana जासु कृपा सुदयाल सीताराम द्रवौ सकल कलिमल दहन नील सरोरुह श्याम सीताराम तरुण अरुण बारिज नयन करो सुमम उरधाम सीताराम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह सीताराम उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह सीताराम करो कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज सीताराम कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज सीताराम जासु बचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होत है सुनहु वीर हनुमान रामा सुनहु वीर हनुमान आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। अच्छा, बालकांड दोहा नंबर 260। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी चितई सीय कृपायतन जान पिकल विशेष सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम देख विपुल बिकल भय देहि निमिष बिहात कलप समतेहि त्रिषित बार बिनु जो तनु त्यागा भये करई का सुधा तड़ागा राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछिताने। अस जिय जानी जानी की देखी, प्रभु कुल के लखी प्रीत विशेषी। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। गुरु ही प्रणामो मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु की लीन्हा। तम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े। तेहि जन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि पाजी तजी मारगु चले। चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि, कोल कूरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे, सकल बिकल विचारहि। को दंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। शंकर चापु जहाजु, सागरु रघुबर बाहुबलु। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ाचु प्रथम ही मोहि बस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। अब यहाँ धनुष भंग भंग की कथा पर हम लोग बात करते हैं। वी टॉकिंग अबाउट द रामचंद्र जी ब्रेकिंग ऑफ द बो। सो हियर इट सेज, राम विलो की लोक सब, चित्र लिखे से देखी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों को की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी को की ओर देखा। सो फर्स्ट रामचंद्र जी looked at all the people assembled there, and it seemed to him like a painting, a chitra. But because his focus was on the job to be done. So all the people who were there didn't seem to be real to him. They seemed to be just a picture because his focus was directed completely on the task at hand. Our Kripa Dham, this all merciful, the one who is the abode of all mercy and grace, Sri Ramchandra ji, looked at Sita Devi और उन्हें विशेष व्याकुल जाना, considering her to be especially restless. She seemed to be disturbed, agitated, stressed to Sri Ramchandra ji. And being all merciful, देखि विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समदेही. He, जानकी जी को बहुत ही विकल देखा. He saw her so agitated, और उनका एक एक क्षण कल्प कल्प के समान बीत रहा था. And his every moment seemed to be like an entire kalp, all the yugas together.
That means even though he looked at her and saw this agitation in her, he saw the stress, and it was only for a moment, but to him it seemed an eternity. क्यों? Why? जिसमें प्यार है, जिसका तुम प्यार करते हो, तुम उसका दुख नहीं सह सकते हो. So if you love somebody, then it means you cannot take that person's suffering. You cannot manage it. उनको सह नहीं सकते. It is too much for you to see your loved one suffering. Through going through this agitation, to Ramchandraji, it was too much. Why was it too much? Because of the love that he had for Sita Mata. And if we love anybody, then we cannot stand to see them suffer. We cannot stand to see them going through discomfort. We will always take action to try to reduce the discomfort, to alleviate their suffering. And that's exactly what Sri Ramchandra ji did. But before he did that, there's a comment that says, Yadi pyasa aadmi पानी के बिना शरीर छोड़ दे, तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा? If a person is so thirsty and he passes away without quenching the thirst, because of the thirst, he passes away, he dies. After he dies, you can bring him an entire lake of Amrit, life-giving nectar. It will be of no value. It is too late. When the time was opportune, we were not able to quench his thirst with water. Now we are bringing Amrit. The Amrit is of no value. Ka parsha sab krishi sukhane. What is the value of rain, parsha, sab krishi sukhane, when all the crops have already dried in the drought? After the crops have dried, the rain is of no value. That crop is not going to awaken again. Samay chuke punika pachitane. And also, when you've already done something, regretting is not going to make it go away. That action that you've already engaged in cannot be taken back. It cannot be reversed. Regretting after the fact is of no value. So in this 3 comments here, it's very important for us to understand when, modern counselors and management coaches and others, they talk about don't dwell in the past. Live in the present, and the future will take care of itself. So dwelling in the past, pachitana, regretting something that you cannot change, is not going to make any difference. Rather, find out what can I do now? What is the best dharma for me in the present moment? The past cannot be changed. So I have no dharma in the past. I have dharma now. My duty is for now. What is the best I can do now so that the future is better for me? Right? So this is an important lesson for all of us. उस जिया जानी जान की देखी, जी मैं ऐसा समझ कर. So Ramchandra ji understood this. Thinking of all of this, he said, Shri Ram ji ने जानकी जी की ओर देखा. He looked towards Sita Mata और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए. He, looking at Sita Mata, recognized the deep love that she had for him. So, and he was overcome with emotion. Again, this is what love is all about. When somebody you can recognize the love in them just by looking at them. It should create this intense feeling in you towards them. So
He recognized this immense love and devotion that Sita Mata had for him, and it raised his awareness of this. It made him emotional. Pulkit ho gaye. So Bhagwan recognizes devotion. Prem ko lakh kar. So when we are devoted to Bhagwan, we don't have to tell him, Bhagwan, we are your devotees. He recognizes it. Lakh kar. He recognizes it. And what does it do to him? Pulkit ho jate hai. It makes him emotional and it draws him towards us. When we have this kind of devotion for Bhagwan, there's no need for any announcements of the devotion that you have. That devotion itself is what will attract Bhagwan to you, which will draw Bhagwan to you. Okay, you know, in the Mahabharata, when Draupadi's clothes were being removed, all Draupadi had to do was to think lovingly of Bhagwan Krishna, and he was there to protect her. He was in Dwarka when this incident happened, so far away. But he understood the devotion that Draupadi had, and he responded. He became emotional and protected her. So this similar situation here. Guru hi pranam manahi manakina. So Ramchandra ji said, I'm not going to wait for the crops to dry before sending the rain. He decided to act immediately. He immediately did pranam to his guru in his mind. Manahi man. Mentally, he paid his respects to his guru. Ati लाघव उठाई धनु लीना, और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया. With complete ease, आसान ही आसान से, very easily he lifted this bow. और जब उसे हाथ में लिया, when he took this bow into his hands, तब वो धनुष बिजली की तरह चमका. That bow shone like lightning. And this lightning, this effulgence of the lightning, आकाश में मंडल जैसा हो गया. It lit up the entire sky. So when anybody is in the hands of God, when Bhagwan takes you in his hand because of your devotion towards him, then you will shine, like just how the bow was shining. But when we are devoted to Bhagwan, then he takes us in his hands, then why is he going to break us? I'm going to talk about that a little later. So, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठारे. Lete means picking up the bow, चढ़ाते, stringing it, और जोर से खींचते and pulling it, किसी ने नहीं देखा. अर्थात तीनों काम इतनी फुर्ती से हुई कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं लगा. So all of this, picking up the bow, stringing it and pulling it, all happened as if in one action. Nobody was able to see that there were three different actions. It took place so smoothly, so easily. So this is because Bhagwan was completely in control of what needed to be done. He was expert in what needed to be done. So when you are expert at something, you will be able to do it, and people will think, how did he do it? What are the steps that he followed? I didn't even notice it. He's so good at it. Isn't that so? So like that, Bhagwan
picked up the bow, strung it, and he pulled it. सबने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा. They only saw him standing with the bow. उसी क्षण, at that moment, श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला. He broke the bow in the middle. भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोक भर गया. And the sound of the breaking bow filled the entire creation, entire universe. घोर कठोर शब्द से, this very strong, very frightening sound से लोक भर गए. सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगा. And the sun's orbit was disturbed. The horses that take Surya Narayan around the sun, or on which Surya Narayan travels, they were disturbed by the sound and could not follow the correct path. दिग्गज चिघाड़ने लगे. And the elephants that are supposed to be responsible for supporting the world and holding it in position, they too were shaken up. धरती डोलने लगे. The earth began to tremor. So like this, the sound of the breaking bow caused a lot of disturbances. But राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे. So the Rakshasas, the demons, और मुनि, and the sadhus, they blocked their ears and began to think, what is this? और तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे. But when they all realized that the sound symbolized that showed that Ramchandra ji had broken the bow, then they all began to sing Bhagwan Sri Ramchandra ji's praises. शंकर चापु जहाजू सागरु रघुर बाहुबल. शिव जी का धनुष जहाज है. So the bow is like an ocean, a ship. और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है. And the strength of Sri Ramchandra ji's arms are like the ocean. वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था. So all those ignorant people, those who were deluded, who were on this boat, on this ship, they were all, it says, वो डूब गया. They were all drowned. So when I said earlier that Ramchandra ji takes this ship, this bow, and it gleams, it glows, it shines, then why did he break it? He broke it to cause the drowning of ignorance and delusion. So when a devotee is taken into Ramchandra ji's hands because of his devotion, then Ramchandra ji will remove all the ignorance and delusion from that person. We'll conclude our recital for today. कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय.
राधे कृष्ण की जय। श्याम रे घन श्याम रे, 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 श्याम रे घन श्याम रे। गोविंदा गोपाला श्याम मुरारी मोरी नंद लाला, गोविंदा गोपाला श्याम मुरारी मोरी नंद लाला। श्याम रे घन श्याम रे, 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 श्याम रे घन श्याम रे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्याम रे घन श्याम रे, 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 श्याम रे घन श्याम रे। गुरु शिवानंद सद्गुरुनाथा, आजा आजा गुरुदेवा, गुरु शिवानंद सद्गुरुनाथा, आजा आजा गुरुदेवा। श्याम रे घन श्याम रे, 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 श्याम रे घन श्याम रे। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान, राधे कृष्ण की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। काष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा। आश करो जिसकी, ओम जय हरे। तुम पूरन
परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख कल कामी मैं मूरख कल कामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अकोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसी विधि मिलो दया में किसी विधि मिलो तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ शरण पड़ा तेरी ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन के सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण प्यारा है मेरा ओम जय जगदीश हरे प्रेम सभा सब मिलकर निश दिन यही गाओ स्वामी निश दिन यही गाओ पार लगा दो नैया पार लगा दो नैया यही अरस गाओ ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते
Om Apradha Sahasrani Kriyante Aharnishang Maya Daso Yamiti Mahamatva Shamaswa Parameshwara Avahanang na janami Visarjanam Pujang Chev na janami Shamaswa Parameshwara Anyatha Sharanang Nasti Tvameva Sharanang Mama Tasmat Karunya Bhavena Rakshitvam Parameshwara. बोलो श्री गणेश भगवान की जय। जगत जननी पार्वती माता की जय। श्री सीताराम की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय। गंगा माता की जय। यमुना माता की जय। गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। So it is holiday time now, and we wish all of you a pleasant time with family. But let's not send Bhagwan on holiday. Let's keep him close to us as we share the special time with our family and friends, those that are near and dear to us. Let's also remember Bhagwan throughout all our good times in this holiday period. Jai Shri Ram.